We have Sandeep Patil, a core committee member of the Rashtriya Kisan Mahasangh, joining us this morning. We also have Anshul Avijit, spokesperson of the Congress, and I'm told that Irfan Ahmed of the BJP will be joining us in just a short while. All right, we do have Irfan Ahmed of the BJP as well with us. Thank you all very much for being with us this morning. I want to begin, Mr. Patil, by asking you, as far as, you're a core committee member of the Rashtriya Kisan Mahasangh, as far as the farmers are concerned, they have time and time again made their demand clear that nothing short of repealing the farm laws will be acceptable. The Home Minister has stepped in yesterday. There was that all-important meeting that took place. What is the strategy going forward? Basically, the time has been passed. More than 3 months we are doing this agitation from the Punjab across the India. We are opposing with these bills. Initially, as the stand of government was very reluctant, they didn't say that there has been some loopholes within these bills. Just before 4 or 5 days back, there has been accepted that the loopholes are there, and we are. All right. Okay, we seem to have lost that line with Mr. Patil. We'll try and reconnect with him. Irfan Ahmed, can I get a quick reaction from you? What is the thinking within the government? What is the strategy going forward? The 6th round of talks that were to be held with the Agriculture Minister today have in fact been called off after the meeting with the Home Minister yesterday. Has any headway been achieved? Has the government, managed to communicate its point of view to the farmers, or does the deadlock just continue? देखिए ऋषिका जी, ये लगातार जो है सरकार से किसान जो है नेता बात कर रहे हैं, लगातार किसानों के संपर्क में है, किसान सरकार के संपर्क में है। जो गलत फहमियां जो है, जिन दलों की जो है वो पूरी तरीके से दुकानें शट डाउन हो गई, दुकानें बंद हो गई, उनको कोई राजनीति के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। जहां भी इलेक्शन होते हैं, जो छोटे इलेक्शन हो या बड़े इलेक्शन हो, वहां पर इनकी जमानतें जब्त होती हैं, ये बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही अपने जो है तुच्छ राजनीति के लिए ये किसानों को, जो भोले भाले इस हिंदुस्तान के किसान हैं, जो किसान इस हिंदुस्तान के एक विकास में अपना योगदान देते हैं, उनके दिमागों को डिरेल्ड करने के लिए, उनके कारोबार को डिरेल्ड करने के लिए लगातार जब से जो है ये तीनों बिल जो है पास भारत की संसद ने किए थे और उनको लागू किया था, सरकार और किसानों के बीच बहुत अच्छा जो है वो कोऑर्डिनेशन था, उसको ये छिन भिन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पंजाब से आए हुए किसान हैं, आपने उनके बारे में देखा होगा किस तरीके से उनमें कुछ जो है किसान के भेष में आए हुए जो कुछ अलगाववादी सेपरेटिस्ट थे, उनको भी जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। किस तरीके से 22-23 नवंबर को जो आम आदमी की सरकार दिल्ली में सरकार है, Anshul Avijit, please respond to that. Please respond to Irfan Ahmed, because the stand that the BJP has taken is that these continue. Okay. Irfan Ahmed, you've made your point. I have to give other people a chance. Respond to that, Anshul Avijit, what you just heard. No, Rishika, I mean, this has been the absurd and utterly subversive narrative of the BJP right from the beginning. Now, Irfan ji has just, confirmed that again. There's been 3 dominant narratives here. First is that it's a kind of a conspiracy. So every protest, ever since the government came into power, has been criminalized. The other narrative is what Irfan bhai was saying, कि ये भोले भाले किसान हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है. They've been misguided. There is mistrust. Somehow that the political parties, the opposition, are persuading the farmers to think otherwise, completely taking agency from the farmers as if they cannot think of by themselves. Galat fahmiyan phailai ja rahi hain. Absolutely false. The farmers know exactly what they're thinking about. They know exactly how the farm laws are going to affect their future. Okay. At the time of the pandemic, when there was already an existential anxiety
among the people of India, among the farm community and people at large. You bring in a law, there is extreme trust deficit. You rush in a law without any discussion, without any deliberation. You subvert I think every the trust democratic deficit, process to yes, bring that I in. think the trust deficit is an interesting point that you raised. And Sandeep Patil, we lost that line with you earlier, but would you like to come in? You've heard what the BJP and the Congress spokesperson have said. The BJP continues to maintain that this is a politically motivated protest, that there is a misunderstanding or an atmosphere of distrust that has been created between the farmers and the government. Would you agree with that? नहीं, इसमें पॉलिटिक्स की बात ही कहाँ आती है? देखिए, हमने भी मोदी जी की जय जयकार किए हैं जब मोदी जी ने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए हैं। तो अगर आगे जाके हमें मोदी जी की फिर से जय जयकार करनी है तो किसानों के बारे में वो सोच ले। जिस तरह बीजेपी इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह एक टाइम में खालिस्तानी को जोड़ रही है, अभी यही बात रह गई है कि मोदी जी ने इतना बताना कि नेहरू जी ही ऊपर से ये कर रहे हैं। जितना भी जैसे भी कुछ आता है कि नेहरू जी के ऊपर डाल देते हैं, तो इस किसान आंदोलन को भी नेहरू जी का ही ठप्पा लगाना ही बाकी है बीजेपी की तरफ से। इसमें पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं है। हम तो देश के पूरे भोले किसान है जो यहाँ पे दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Okay. हमें न्याय चाहिए। Politics aside, Sandeep Patil, let's also just talk about the issues at hand here. I know, Irfan Ahmed, you want to come in, and I will give you a chance, but I do want to ask Sandeep Patil about the issues. You know, the major demands that have been, that the farmers have put forth versus what the government is offering in terms of amendments. You know, where is the deadlock? What are the key sticking points? देखिए, 3 महीने से जब आंदोलन कर रहे थे, पहले शुरुआत में तो हम यही कह रहे थे कि इसमें कुछ बदलाव कीजिए। 3 महीने पहले की सिचुएशन ऐसी थी कि खाली एक एमएसपी की लाइन डालिए। उस टाइम में हमारा किसी ने सुना नहीं। जब हमने 26 तारीख को यहाँ पे आए थे, 27 तारीख को हमारी ये बात थी कि इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, सरकार वो करेंगे तो हम आंदोलन वापस लेने की तैयार है। जिस तरीके से बीजेपी ने इस आंदोलन को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, जिस तरह इन्होंने पूरे डेमोक्रेसी कंट्री का अपमान किया है। नहीं, लेकिन संदीप पाटिल, one second, we like I said, leave the politics of it aside for a moment. मुद्दों की बात करते हैं। क्या की स्टिकिंग पॉइंट्स है अभी? फार्मर्स की क्या डिमांड है और गवर्नमेंट आपको क्या ऑफर कर रही है और कहां पर जो है ये बात बन नहीं रही है, वो बताइए। देखिए, गवर्नमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड टू मेक द अमेंडमेंट विद इन दिस फार्म बिल्स, बट वी आर स्टिल स्टिक अप to roll back this bill. Okay. As their government has been agreed, there are loopholes within this farm bills. We are just demanding that you need to roll back these bills with the loopholes. Okay. And you can come with the commission, you can appoint new commission, okay. And you can come with the new. इरफान अहमद, प्लीज इस बात पर रिस्पॉन्ड कीजिए। फार्मर्स कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है कि देयर आर लूप होल्स इन बिल्स में, जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है या बहुत जल्दी पास की गई विदाउट एक्चुअली बिल्डिंग द कंसेंसस फॉर देम ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज इफ द गवर्नमेंट इज विलिंग टू मेक अमेंडमेंट्स, why not just scrap the bills and sort of re-invoke them with these amendments? It may be a more palatable solution to the farmers. Irfan Ahmed. ऋषिका जी, एक पाटिल साहब को मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो अभी भी किस काम में लगे हुए हैं? अपने यहाँ उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी जो है एक उक्ति है कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। ये 1970 में एपीएफसी एक्ट किसने बनाया? इनकी उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बनाया। मैं वही बताना चाहता हूँ। सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे किसानों की जो डिमांड्स है उस पर सवाल। ऋषिका जी, मैं मेरी बात को आप we've talked about the politics of it, and let's not talk about the politics of it. Let's please talk about the issues at hand. मैं पाटिल साहब की बात का जवाब देना, क्योंकि आपका जो चैनल है वो पूरे देश में इस टाइम देखा जा रहा है, तो मैं अपनी बात का जब तक पूरा जवाब नहीं दूंगा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये एपीएमसी एक्ट जो है वो इंदिरा गांधी जी ने जो है बनाया था, उसी में वो कमीशन एजेंट का और बिचौलियों का प्रोविजन किया था। और हमारे जो भोले भाले किसान हैं, जब वो मंडियों में जाते थे तो उनको कोई ऑप्शन ही नहीं था मैं अपनी फसल कहीं बेच सकूं। उन पर उनकी जो है बिचौली और कमीशन एजेंट की दादागिरी होती थी। आपसे बहुत सीधा सवाल है, विल द गवर्नमेंट वो फसल खरीदते थे, उनको उनकी पेमेंट भी 15 दिन के बाद में देते थे, कोई महीने के बाद में देते थे। हमारी किसानों के संगठनों की और भारतीय कंसेंसस, इज दैट समथिंग दैट द गवर्नमेंट विल कंसीडर डूइंग? बहुत सीधा सवाल है, यस और नो आंसर।
किसानों की और सरकार की बात हो रही है। कहीं पर अगर जो है किसानों को कोई ऐसा लूप होल की जो बात की उनको लगता है, सरकार उनकी पूरी तरीके से अभी पिछले छठी सातवीं दौर की बात हो गई है। All right. So you're उनकी saying the बातों को talks सुन will रही है continue. और उस पर जो है Anshul संज्ञान ले रही है। Anshul Avijit, लेकिन I ये भोले have भाले to give you किसानों the को जो last इस word, तरीके से 30 उकसा कर seconds. What is the strategy पैंडेमिक of the 19 के opposition? You're इसमें going to be meeting उकसा with the कर उन्हें president बिठाया हुआ today. है। What is the strategy of the opposition? There is only one strategy of the opposition, that these laws have to be repealed. Now we're going to meet with the president and we're going to urge him to tell the center, tell the executive that listen, stop this. Now stop dragging your feet on the issue. The farmers have made their positive of law. We know the future is at stake at these very anxious times. So we want the farm laws to be repealed. We want the MSP to become a statutory law, something that the Prime Minister himself said when he was the CM of Gujarat. Now, there's a turn back, there's a complete U-turn in the way the government is going about this. We want the farm laws to be absolutely repealed. All right. So the strategy as far as the opposition is concerned is that they want the farm laws to be repealed. They're going to be making a representation to the President of India at 5 p.m. this evening. Ahead of that meeting, the opposition is also going to be in a huddle. There will be an opposition meet that will take place. The thinking within the government at the moment is that they are going to be sending a fresh proposal with proposed amendments to the farmers. The farmer unions are not going to be meeting representatives of the government today. Instead, they are going to be holding their own internal deliberations at noon. So it's a day where there are going to be lots of negotiations, lots of meetings lined up. We'll continue to track all those details and developments. Appreciate you, gentlemen, for being with us this morning